question, otherwise we'll move forward. Yes, you can raise your hand and ask your question if you have any problem. No doubt. Okay, let's move for the next part. We have seen that friends had reached the school and he found many surprising things on that day. First thing, he noted that there was quite silence as it was Sunday morning. Then he noticed that all the classmates were sitting in the class. He entered in the class when he thought that he would enter in the commotion and he would not be noted by anyone, but everything was silence, so he was noted by everyone. He noticed that there were villagers who were sitting on the back benches, and we were given the reasons also why they were sitting. Then we are told that the teacher was in a special dress, that was wearing green coat, frilled shirt, and the hat also. And what are the reasons we are given by the villagers were sitting at the back benches? He realized because some of them were having the primer, the beginner book in their hands, and he realized when the teacher told that this was the last lesson of the French, the order had come from Berlin not to teach French, and the next day German teacher will be coming and they would be taught German. Then he realized about his problems, that he had been delaying the things, he had not been serious for his studies, and क्या सोचता रहा कि कोई बात नहीं कल कर लेगा, and he was tempted by the outside things, and now he realized he was feeling ashamed and repentful that he had not learned anything about his language. He did not know how to write even. And at that time, he realized why these villagers were sitting at the back benches. First thing, they were sorry because they had never gone to school, they were uneducated. Secondly, they thought that they were there to thank the master, M. Hamel, who was there for 40 years, giving his faithful service, teaching their children. And the third thing, they wanted to show their respect for their country that was not theirs now, क्योंकि अब उनका कंट्री ओवर पावर हो गया था, कंट्रोल में आ गया था जर्मन्स के, प्रूशियंस के. So the country did not belong to them now. Now while he was thinking all this, he just listened his name when the teacher called and he was told to recite about the participles, but he was not able to explain the things properly. He got confused and mixed up all the things. Then he realized that he had been very careless, and in this way he thought that the French people would be thinking about all this, that they are not having the knowledge of their own language also. Germans will make fun of them. And we were here on this passage at the last when we read that he said, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst. Poor little France, we have all a great deal to reproach ourselves with. This was the last line that we were reading, and I told you that I'll explain you this last line again because it has a special importance and the meaning. So you must understand, it is on the page number 5. If you have books, on page 5, this paragraph which starts from, I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad. एनफ मीन्स आपको अपने आप समझ आनी चाहिए वो क्या सोच रहा है कि वो जर्मन लोग क्या कहेंगे कि आप फ्रेंच लोग हो लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आती है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट. और उसको वो समझा रहा है कि फ्रेंच सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो, और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती होगी. Then he says, we have all a great deal to reproach ourselves with. Please underline this line, which have a special meaning. And you must be clear about this meaning. This line many times comes as a question also. He explain this line. What he says, we have all a great deal to reproach ourselves. Reproach means to criticize ourselves. कि हम बहुत बार अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं किन चीज़ों के लिए, फॉर डिलेइंग द थिंग्स. कि हम पहले तो कह देते हैं बहुत टाइम है हमारे पास, हम चीज़ों को पोस्टपोन करते जाते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, लेकिन होता क्या है, एंड में हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को ही बुरा भला कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया. Your parents were not anxious enough. Now he is giving the reasons.
why we criticize ourselves and who are at fault when the students are not learning properly. He says your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little money. कहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं, दिस इज नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ द स्टूडेंट इज नॉट वर्किंग वेल, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द फॉल्ट ऑफ द टीचर एज वेल एज द पेरेंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द स्टूडेंट. तीनों की ही गलती होती है. कहता अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं काम कर पा रहा तो फर्स्ट ही ब्लेम द पेरेंट्स. कहता आपके पेरेंट्स जो थे दे वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, कि आपको लर्न करने के लिए वो मोटिवेट करें या एनकरेज करें. दे वर नॉट एंशियस फॉर दिस. they prefer to put you to work on a farm or the mills. उन्होंने क्या प्रेफर करा कि वो आपको किसी फार्म हाउस में भेजें या आपको किसी मिल में भेजें काम करने के लिए, so that you can get a little more money, कि आप अर्न कर सको कुछ पैसा. Means they were giving preference to this thing than your learning. And I means here the teacher M. Hamel. This is the speech of M. Hamel. He is trying to explain the fault why the students are not able to do proper in their learning part. It says, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कहता कि मैं भी इसमें अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ. मतलब टीचर इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ ऑल्सो. वो अपने आप को भी गलत कह रहा है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. कहता मैं आपको अपने फ्लावर्स को प्लांट पानी देने के लिए भेजता रहा हूँ, अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए भेजता रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ saying this that you should learn your lessons. मतलब टीचर भी अपने पर्सनल वर्क उससे करवाता रहा बच्चों से कि वो उनको लर्निंग के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा था बल्कि उनसे अपने और काम करवाता था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे. और जब कहता मैंने फिशिंग में या कहीं भी समझ लीजिए उसने अपने एंटरटेनमेंट लिए कहीं जाना होता तो वो बच्चों को छुट्टी कर देता. दैट मीन्स ही वॉज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड. वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है कि पेरेंट्स भी इस चीज को प्रेफर नहीं करते थे कि बच्चे लर्न करें, वो उनको कहीं काम पे भेज देते थे सो दैट दे कुड अर्न मनी. एंड टीचर ऑल्सो इज having blame for that because according to him he was sending his children to plant water the plants and to have holiday whenever he has to go for fishing. Then from one thing to another M. Hamel went on to talk of the French language. और इस तरीके से बात करते करते एम हेमल जो है वो एक बात से दूसरी बात की तरफ चल पड़ा और उसने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताने शुरू कर दी. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज. कि पहले वो इस चीज को बताता है कि हम कैसे अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, बिकॉज हम पहले पोस्टपोन करते रहते हैं और उसमें सिर्फ बच्चे का ही फॉल्ट नहीं होता, टीचर का भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है. देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. क्या कहता है कि ये लैंग्वेज जो है इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, the clearest, the most logical. See the glorification of the language he is giving just to make them realize that their mother tongue is very important for them. कहता क्या है कि the clearest, the most logical, that we must guard it among us. कि हमारी ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है and it is the clearest, the most logical and we must guard it means protect it among us. अपने में हमें इसको संभाल कर रखना है and never forget it. और इसको भूलना नहीं है because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Please underline this line, which is very important and which gives us the theme of your chapter, the idea of the chapter also. क्या बता रहा है कि we should not forget our language, we must protect our language जैसी भी situation हो. बिकॉज वेन पीपल आर एनस्लेव्ड, कि जब लोग जो हैं स्लेव बन जाते हैं, किसी के गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड रखते हैं, होल्ड रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि उनकी प्रिजन की उनके अपने हाथ में है. दैट मीन्स द लैंग्वेज, देयर मदर टंग इज कंसिडर्ड एज द की टू देयर प्रिजन. कि अगर वो स्लेव हैं, उनको प्रिजन में बंद कर दिया गया है, तो उस प्रिजन को खोलने की एक ही चाबी है, दैट इज देयर मदर टंग. सो वी शुड हैव होल्ड और प्रोटेक्शन ऑफ आवर मदर टंग. वी शुड नॉट फॉरगेट इट. कि अगर हम अपनी मदर टंग को भूल जाते हैं तो हम पूरी तरह दूसरों के गुलाम हो जाते हैं. इसलिए हमें अपनी मदर टंग को प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ अपना लिंक जो है वो बनाए रखना है, उसको भूलना नहीं है. So please underline this line, which is very important according to the point of view of the theme, where he glorifies the language and gives the importance of the mother tongue.
when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, कि जैसे उनकी prison की यही उनके पास की है, अगर वो अपनी mother tongue को hold में रखते हैं, उसके साथ link बनाए रखते हैं. Then he opened a grammar and read us read us our lesson. फिर उसने grammar book खोली और उसमें से जो lesson उसने students को बताना था, he read that. I was amazed to see how well I understood it. See his feelings now, the feelings of the student, because earlier he realized that he was not careful in the class. So he was not understanding anything, और उसका ध्यान नहीं था, वो पढ़ाई में मन नहीं था. लेकिन अब उसकी feelings change हो गई और उसने बड़े ध्यान से टीचर को सुना और वो खुद हैरान था कि उसको हर चीज समझ आ गई, जबकि पहले वो क्या कहता था कि उसको समझ नहीं आती थी, बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास. दिस इज अ जनरल फिनोमेना कि अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ आएगा, अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा. दैट मीन्स दिस शोज आर एटीट्यूड. अगर हम अटेंटिव हैं, केयरफुल हैं, तो हम अच्छे से समझ पाते हैं चीज को. अगर हम केयरलेस हैं, हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते किसी चीज में, तो विल नॉट अंडरस्टैंड, एज इट हैपेंस विद यू स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो ही सेज आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं बहुत हैरान था ये देखकर कि मुझे सब कुछ समझ आ गया. ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, कि जो भी उस दिन टीचर ने पढ़ाया वो मुझे ऐसे लग रहा था बहुत इजी था. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. तब उसने रियलाइज करा कि वो कभी ध्यान से नहीं सुन रहा था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या कि टीचर ने इतनी पेशेंस से कभी एक्सप्लेन नहीं करा था, और आज उसका लास्ट डे था, लास्ट लेक्चर था, इस वजह से शायद वो अच्छे से, वो भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. उसको क्या लगा, ये poor man refers to the teacher M. Hamel. उसको लग रहा है कि वो भी आज सब कुछ वो हमें बता देना चाहता है जो भी उसको पता है. That means whatever he knew, he wanted to give that knowledge to the children and to the people who were sitting in the class, and to put it all into our heads at one stroke. और एक ही स्ट्रोक में, मतलब एक ही प्रवाह में, एक ही फ्लो के साथ वो सारी चीजें हमारे दिमाग में डालना चाहता था. सो ही रियलाइज्ड दैट ही वाज आल्सो केयरलेस, and now the teacher was also explaining everything with so patience that he was understanding each and everything, as he wanted to give them the whole knowledge whatever he had. After the grammar, we had a lesson in writing. Grammar के बाद writing में lesson दिया गया. That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsek, France Alsek. और उस दिन ग्रामर के लेसन के बाद जब उसने राइटिंग का वर्क दिया, he had brought new copies for all of them, and in those notebooks, in the beautiful hand, the words were written France Alsek. These two words were written in beautiful hand. They looked like little flags floating everywhere in the school room. और उनको क्या लग रहा था, those words were just like the floating flags, कि flags जो थे वो उस फ्रांस के उनके घूम रहे हों on each and every desk in the school classroom, hung from the rod at the top of a desk, कि उनके डेस्क के ऊपर जैसे कि वो फ्लैग्स की तरह घूम रहे हों. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. कहता आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपने देखा हो उस चीज को, आपको देखना चाहिए था कि कैसे वो लोग सब काम कर रहे थे. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना क्वाइट, शांत था माहौल. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. दैट शोज द सीरियसनेस एंड द सैडनेस इन द माइंड्स ऑफ एवरीवन, कि सारे बच्चे, सारे एल्डर्स, सिटीजन जो भी वहां कमरे के अंदर बैठे थे, रूम के अंदर, दे ऑल वर वेरी क्वाइट, दे ऑल वर वेरी सीरियस, और दे ऑल वर लिसनिंग टू द टीचर. और कोई आवाज नहीं थी वहां पर, सिर्फ जो आवाज आ रही थी, दैट वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और हुआ क्या, अचानक कुछ बीटल्स, कुछ इंसेक्ट्स जो थे, जैसे फ्लाइज वगैरह होती हैं, ऐसे ही घूमती हुई कमरे के अंदर आ गई. एंड नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. वेरी सरप्राइजिंग कि अगर कोई ऐसी चीज कमरे के अंदर आ जाए तो बच्चे तो एकदम शोर मचा देते हैं. बट इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग ऑन दैट डे फॉर हिम कि नोबडी पेड एनी अटेंशन फॉर दैट, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, कि छोटे बच्चे भी जो थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. और उनको ऐसे लगा कि जैसे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज ही उनको सिखा रही हो, और वो अपनी फिश हुक्स को लेकर, जैसे फिशरमैन पकड़कर अपनी हुक को ध्यान से बैठा रहता है, ऐसे ही वो बच्चे भी अपने कॉपीज को पकड़कर और अपने उस काम में बिजी रहे. ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, will they make them sing in German, even the pigeons? Please underline this line again.
Then suddenly one idea came in his mind, in the mind of Franz, when he listened the cooing sound of the pigeons, कि उसने रूफ के ऊपर, छत के ऊपर उसकी आवाज सुनी पिजन्स की, तो उसके माइंड में एकदम से क्या इमेजिनेशन आई कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जर्मन लोग जो हैं वो उन पिजन्स को भी कंपेल करेंगे इस चीज के लिए कि वो भी जर्मन में सिंग करें. कैन इट बी पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन रियलिटी Germans can compel the human beings to speak their language, to learn their language, but they cannot compel the pigeons. बर्ड्स की एक अपनी नेचुरल लैंग्वेज होती है और वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, उनकी लैंग्वेज सेम रहती है. सो दे विल नॉट बी कंपेल्ड. But Franz, being a child, was very excited and was very enthusiastic to know this thing कि क्या इस कंट्री में, फ्रांस में जो पिजन्स उड़ेंगे, क्या उनको भी वो कंपेल करेंगे कि वो भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करें. He was not able to understand this. What does it show? That they can compel only the human beings, not the birds or the animals, to speak in their language, because they have their own natural language. They will keep on speaking or singing in their own language. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school classroom. कहता जब भी मैंने ऊपर उठाकर अपना मुंह देखा तो टीचर जो था वो मोशनलेस अपनी चेयर के पास खड़ा था, इधर उधर देख रहा था, जैसे कि वो उस कमरे की हर पिक्चर को अपने मन में उतारना चाहता हो. फैंसी, कहता आप इमेजिन कर सकते हो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, कि 40 साल से वो उस कमरे में पढ़ा रहा है जिसके बाहर गार्डन है, विंडो से वो उस गार्डन को देखता है. और अब वो इमेजिन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है कि वो यहाँ से जा रहा है. Just like that, only the desks and the benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. क्या नोट कर रहा है कि सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो हैं वो वॉर्न आउट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं. वॉलनट ट्रीज, प्लीज बेटा कीप योरसेल्फ म्यूट. गुरतेज, गुनतेज, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट. कुलदीप सर, प्लीज चेक. Only the desks and the benches had been worn out. उसने क्या नोट करा कि सिर्फ बेंचेस जो हैं वो worn out हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, और जो वॉलनट ट्रीज जो थे गार्डन में लगे हुए वो टॉल हो गए हैं. एंड द होप वाइन, एक वाइन लगी हुई है बाहर, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, सारी विंडोज के ऊपर फैली हुई हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट एट ऑल. तो उसका दिल कैसे टूट रहा था उन सारी चीजों को देखकर जो कि वो 40 years से देख रहा था. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day, क्योंकि वो अगले दिन कंट्री को छोड़कर जा रहे थे. और उसी बिल्डिंग के ऊपर वो उसका घर था और उसकी सिस्टर जो थी वो पैकिंग कर रही थी. He could be listening the sounds of packing being done by his sister and was feeling very hard to leave that area where he had been since last 40 years. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But even then, he was very courageous and he was listening and teaching his lesson. After the writing, we had a lesson in history. And then the babies chanted their ba, b, bo, b. These are the alphabets of the French language, which he wanted to teach to those elders who were sitting in the class and they were considered as babies. कि उनको जैसे बिगिनर क्लास में अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, ऐसे वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहा था. मतलब राइटिंग के बाद उसने हिस्ट्री के लेसन्स दिए बच्चों को, हिस्ट्री के बाद उसने एल्डर्स जो थे उनको ये अल्फाबेट सिखाए. Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. कि old Hosser जिसके पास प्राइमर था, उसने अपने spectacles पहने और वो उन words को spell कर रहा था. You could see that he who was crying, his voice trembled with emotion. मतलब इमेजिन कर सकते हो आप कि वो भी चिल्ला रहा था, उसकी आवाज जो थी वो कांप रही थी इमोशंस के साथ. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. मतलब इतना फनी लग रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी जो है उन अल्फाबेट्स को बोल रहा था चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन बच्चों की तरह कहते हम चाहते थे हंसना उसकी आवाज को सुनकर और क्राई कर रहे थे. हाउ वेल आई रिमेम्बर दैट द लास्ट लेसन. That last lesson could not be forgotten by me. It was a very
funny and very serious lesson they had. All at once, the church clock struck 12. अचानक उस आवाज हुई, एक वहाँ चर्च क्लॉक की बेल हुई 12 o'clock की. Then the Angelus means the prayer, that is the ending prayer of the day. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. तभी उन्होंने क्या देखा कि जो प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, उनके ड्रम बीटिंग की आवाज जो थी वो बंद हो गई, वो वापस आ रहे थे. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. Please underline this word, what he says, so tall. मतलब उसकी height नहीं बढ़ गई थी. Tall here, that means his reputation, his prestige, his respect in his mind has grown better than before. तो उसको क्या लग रहा था कि अब this was the ending of the day. ये जो prayer bell हुई है, that shows the ending of the school also. तो वो अपने आप में बहुत पेल घबराया हुआ खड़ा था, लेकिन फ्रेंड्स उसको क्या फील कर रहा है, दैट ही वाज लुकिंग वेरी टॉल. दैट मींस ही वाज हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, लव फॉर द टीचर ऑन दैट डे. माय फ्रेंड्स, सेड ही, आई दिस शोज द डैशेस, दैट मींस ही वाज नॉट एबल टू स्पीक. ही वाज बिकमिंग इमोशनल नाउ, बट समथिंग चोक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन. कि कुछ उसके गले में चोक कर रहा था, उसको रुंध रहा था, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्पीक. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. Or because he was not able to speak, so he turned toward the blackboard, took a piece of chalk, and he wrote on the board in his handwriting, Viva la France. That means, long live France. He was praying for his country that it should live long. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand, or because he was very emotional, he could not do anything, could not speak, so he leaned towards his head, झुक जाता है दीवार का सहारा लेकर, and without saying a word, he made a gesture to us with his hand, हाथ से इशारा करता है सबको, school is dismissed, you may go. That the school is over now and you can go. That means he became so emotional that he could not speak anything. He had to move his hand to give the gestures and to write on the blackboard to show his emotions. He prayed for the well-being of his country, and he told all the people and the students to leave the class because according to him, the school was over now. Okay, so with this, we have finished the chapter. And I request you all to please go through the chapter once again and find out the questions given in the boxes in between the chapter also, and at the end of the chapter also in the exercises. Please go through the questions. We will discuss the questions tomorrow. Okay. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll end the meeting.